A block of mass m has a circular cut with a frictionless surface as shown. ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है दिस इज द सर्कुलर कट. The block rests on the horizontal frictionless surface. This is frictionless of a fixed table. Initially, the right edge of the block is at x equal to 0 in a coordinate system fixed to the table. Point mass m is released from rest. ठीक है, यहाँ पे है एक point mass m. Okay, ये small है, ये release किया गया at the topmost point of the path as shown, and it slides down. When the mass loses contact with the block, its position is x, okay, and velocity is v. ठीक है, तो जब यहाँ पे आ गया तो इसका velocity v हो गया है and position is x. If that understand which of the following options is correct. तो अब अगर ध्यान से देखा जाए, so what happens is that है ना, initial condition में कुछ ऐसा है, ठीक है, ये है यहाँ पे स्मॉल मास और लेट अस से ये है बड़ा मास का सेंटर ऑफ मास. नाउ दिस इज दी लाइक ऑरिजिन. ठीक है, तो इनिशियली अगर देखा जाए तो सेंटर ऑफ मास कहाँ है इनिशियली इट्स माइनस एम, है ना, इसको ए अगर मान लेते हैं तो माइनस एम इंटू आर माइनस कैपिटल एम इंटू ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एम. ये ओके. अब जब ये बॉल यहाँ तक आएगा, ठीक है, लेट्स से ये बॉल जो है अब नीचे आ चुका है और तब तक दिस मास हैज मूव्ड लेट्स से एक्स, ना, ये है सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज द स्मॉल एम. तो अब जो है सेंटर ऑफ मास कहाँ हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी माइनस एम इंटू एक्स माइनस एम इंटू ए प्लस एक्स, क्योंकि ये तो ए दूरी था ना, डिवाइडेड बाय एम प्लस एम. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देयरफॉर द सेंटर ऑफ मास इज नॉट गोइंग टू चेंज. तो जब सेंटर ऑफ मास नहीं चेंज होगा तो दिस बोथ द सेंटर ऑफ मासेस हैज टू बी इक्वल. तो अभी इक्वल कर लेते हैं हम लोग. तो माइनस एम आर माइनस कैपिटल एम ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एम शुड बी इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस एम ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एम प्लस एम. ठीक है, ये दोनों चला गया. नाउ यू राइट माइनस एम आर माइनस एम ए इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस एम ए एंड माइनस mx. So ma and ma is gone, so therefore x becomes mr divided by m plus m. ठीक है, तो ये this goes, you know, the capital M mass, it goes the x distance. ठीक है, अब इस ऑप्शन में देखिए ध्यान से, the x component of the displacement of the center of mass of the block M इज, तो ये सही, ठीक है, क्योंकि x हमारा जो है देखिए ध्यान से यही आएगा. द पोजीशन ऑफ द पॉइंट मास इज, नहीं, पॉइंट मास का पोजीशन अब क्या हो जाएगा, वो भी यही हो जाएगा, x दूरी ही हो जाएगा, तो ये गलत है. अब वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं. सो नाउ इफ यू सी द वेलोसिटी, ओके, again since there is no horizontal force then momentum has to be conserved. तो अगर ये मास इधर जा रहा है v से, ओके, and that's mentioned here, you know, this v is mentioned here, the velocity is v. अगर ये v से जा रहा है small m, then this should go, this capital mass will go with v1 and mv1 should be equal to small m into v. So v1 will be equal to m by m into v. Now how much is the like decrease in potential energy? ठीक है, तो ये छोटा मास यहाँ से यहाँ आया है, तो therefore I tell the decrease in potential energy is going to be mg into r. Okay, now how much kinetic energy is increased? So half
this is small m is having velocity v, so half mv square plus capital M is having the velocity v1 square. Okay, since there is no friction involved, so therefore there should be no loss in energy. Therefore, both should be equal by the conservation of energy. So therefore, we can write mgr is going to be equal to half m v square plus half capital M v1 square, and let us substitute v1 as m square v square. Okay, so now this becomes this m and m is gone. So therefore gr becomes half m plus m divided by m into v square. So v becomes 2gr into m by m plus m root, which is equal to root over 2gr 1 plus m by m. Okay, so this is the velocity, of small v. Okay, so again let us go. So the velocity of the small v is this much, that is true, and the velocity of the block capital M is, this should be small m by capital M into v. Okay, तो ध्यान से देखिए, in the denominator there is a sum here. If this denominator doesn't have a sum, so it will not be. Okay, so A and D is the answer. Let us find out only. So it is going to be m by m into root 2gr by m plus m into m. This m comes here, it's m square, so this is going to be like this. Okay, और ये नहीं, so therefore A and D are the options.